Welcome back. In this session, we'll do the table-wise analysis of GSTR-9. Now, GSTR-9 consists 6 parts. It is bifurcated into 6 parts, and each part consists subtables. Right? So, GSTR-9 consists of 6 parts and 19 tables. So, GSTR-9 is bifurcated into 6 parts and 19 tables. There are 19 tables. Part 1 is about basic details, where we are providing basic details like GSTIN number, financial year, trade name, and legal name. All these 4 details are auto-populated, right? You need not require to report these things manually. These are auto-populated on GST portal. Second is details of outward and inward supplies made during the financial year. Part 2 of GSTR-9. Details of outward and inward supplies made during the financial year. Table number 4 and table number 5. Part 3 is about details of ITC declared in returns filed during the financial year. Table number 6, table number 7, and table number 8. Details of tax as declared in return filed during the financial year. Table number 9, tax payable and tax paid during the financial year. Particulars of the transaction for the financial year declared in the return of next financial year. So you are allowed to do the adjustment till 30th November of next year. So all those adjustments you required to mention in part 5 of GSTR-9. Part 6, other information like pending refund claim, demand of taxes, total tax paid, etc. HSN-wise summary of inward and outward supply. All those things are covered in part 6, that is table number 15 to table number 19. Now, specifically in this session, we are going to focus only on 2 tables, table number 4 and table number 5, which are pertaining to outward and inward supplies made during the financial year. So, part 2, heading head, details of outward and inward supplies made during the financial year. So, whatever supplies you have made during the financial year, information in respect of those supplies you required to furnish in table number in part 2 of GSTR-9, right? So what is the difference between made and furnished? See, it may happen that you are failed to furnish information with respect to certain supplies in GSTR-1 or in GSTR-3B, or there might be the case where you have reported that a particular transaction in subsequent financial year. So in that case, here what wordings are saying, it says that outward and inward supplies made during the financial year. So whatever outward supplies you have made during the financial year, information with respect to that outward supply you required to furnish in table number 4 and table number 5. So even if you have not furnished details of outward supply in, say, in your GSTR-1 or in GSTR-3B, in that case you required to furnish that information, missing information, in GSTR-9. Now table number 4A, what it says, supplies made to unregistered person, B2C supply. B2C supply किधर report करते हैं हम? Table number 5 and table number 7 of GSTR-1. Now same table you can use for furnishing the details of B2C in case of table number 4A. Now see, you require to furnish the details in table 4A along with the amendments. So if there is any debit note or credit note in case of B2CL, or in case of any amendment, so in that case this information in table 4A will be furnished after considering the amendments, right? So table 5 and table 7 of GSTR-1 along with the amendment in GSTR-9 and table 9 and table 10 of GSTR-1 will be considered for the purpose of filing information in table 4A. Precautions क्या लेने हमको? Many times when we are supplying to the customer is not providing GSTIN number. So in that case,
we are reporting that transaction in B2C, but subsequently we are amending that information, we are amending B2C and we are reporting that in B2. So you require to take the cognizance of that reporting while reporting information in table 4A. So manually you require to reduce that figure from table 4A because amendment वाला part इधर directly आता नहीं है. If there is any missing B2C supply, if there is any missing B2C supply, in that case also you require to report, you require to add that missing supply in table 4A. So if there is any value of supply which is not declared in GSTR-1 and GSTR-3B, those missing supply also you can incorporate here in B2C supply. Now this table is mandatory, there is no relaxation. So table 4A is mandatory table, you require to furnish information in table 4A. Next is table 4B. Table 4B is applicable in case of supplies made to registered person, जिसको हम B2B supply बोलते हैं. B2B supply, table 4A of GSTR1 is the relevant table for furnishing details in table 4B. Wrong reporting of transaction. Now many times we have seen that in while furnishing details in table 4A, रेगुलर ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसमें हम डीम्ड एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शन डाल देते हैं. तो व्हाइल फर्निशिंग इंफॉर्मेशन इन टेबल 4B, अगर आपने कोई रेगुलर सप्लाई डीम्ड एक्सपोर्ट में डाला है या डीम्ड एक्सपोर्ट अगर आपने रेगुलर सप्लाई में डाला है, तो दैट रिपोर्टिंग यू कैन चेंज, दैट रिपोर्टिंग यू कैन रेक्टिफाई व्हाइल फाइलिंग GSTR-9. अगेन दिस टेबल इज मैंडेटरी, देयर इज नो रिलैक्सेशन. In this case, you need not require to report debit or credit note here in table 4B because separately उसको नीचे टेबल दिया गया है. तो डेबिट क्रेडिट नोट या अमेंडमेंट के लिए सेपरेट नीचे टेबल है. There you can report your amendment. Here you just require to report information of invoices, supplies made to the registered person. Third है zero rated supply. Now what is zero rated supply? Zero rated supply is the special concept, is the special levy under the IGST Act. Zero rated supply includes two types of supply, export and supplies to the SEZ. So in case of export or supplies to the SEZ, those transactions are known as zero rated supply. Now in table 4C, you just require to report the transaction of zero rated supply export on payment of tax. Again, in zero rated supply you have got two options. Either you will make the supply with payment of tax or without payment of tax, right? So here you just required to mention zero rated supply export with payment of tax except supplies made to SEZ. स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अगर आपने कुछ सप्लाई किया है विद पेमेंट ऑफ टैक्स, तो वो टेबल नंबर 4C में नहीं आएगा. दैट विल बी रिपोर्टेड इन टेबल नंबर 4D, राइट? टेबल नंबर 4C में आपको सिर्फ जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट दिखाना है ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स. टेबल 6A इज द रिलेवेंट टेबल ऑफ GSTR1, जिसके ऊपर से आप ये इंफॉर्मेशन भर सकते हैं. अगर कुछ रॉन्ग रिपोर्टिंग आपने किया है, मेनी टाइम्स वी हैव सीन दैट export without payment of tax is tagged as export with payment of tax. So in that case वो रिपोर्टिंग आप इधर रेक्टिफाई कर सकते हो. ओके, यू कैन रेक्टिफाई दैट जीरो रेटेड सप्लाई. इधर से आप लेस करके नीचे टेबल 5 में उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो. इफ देयर इज एनी मिसिंग ट्रांजेक्शन विच यू हैव सब्सिक्वेंटली रिपोर्टेड इन से सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन ऐड दोज मिसिंग ट्रांजेक्शन here in table number 4C. इसमें सिर्फ प्रॉब्लम एक है कि अगर आपने GSTR1 में रिपोर्ट ही नहीं किया है विद पेमेंट ऑफ टैक्स, इन दैट केस नो डाउट आप टेबल नंबर 4C में उसको ऐड कर सकते हो. बट अनलेस यू रिपोर्ट दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इन GSTR1, एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स के अंडर आपको जो रिफंड मिलता है
वो रिफंड आपको नहीं मिलेगा। तो बेटर इस केस में जो सिनारियो हो सकता है वो है कि आप GSTR 1 में आप उसको रिपोर्ट करो एंड देन यू ऐड दैट पर्टिकुलर फिगर हियर इन टेबल नंबर 4C. अगेन टेबल नंबर 4C is mandatory. In this case also you required to furnish the details mandatorily in this table number 4C. Table number 4D is also regarding details of zero rated supply with payment of tax. But here you just required to mention the details of supplies made to special economic zone on payment of tax. So here you just required to mention the details of supplies made to the SEZ with payment of tax. Again, table number 6B of GSTR 1 is relevant for filing this information. Now all these tables, right from table number 4A to 4G1, all the tables are editable. Information will auto populate from GSTR 1. GSTR 1 से automatically information इधर आ जाएगी. But you can edit those things, right? क्यों? Because जैसे हमने B2B में देखा कि in case of B2B, it may happen that certain supplies, certain information you have not furnished in GSTR 1 or say in GSTR 3B. In that case, that information will not auto-populate in this B2B tab. So you can manually add those things, and that is why option is given को editable रखा है. Similarly, ऐसा हो सकता है कि 22-23 का एक इनवॉइस है जो मैंने 23-24 में रिपोर्टिंग किया. 22-23 का इनवॉइस है जिसका रिपोर्टिंग मैंने 23-24 में किया था. तो in that case, when you are filing GSTR 9, in that case you required to remove that 22-23 information and you required to just provide the information of 23-24. तो एडिट फैसिलिटी दी है तो आपको 22-23 की जो भी इंफॉर्मेशन थी वो उसमें से आप रिड्यूस कर सकते हो. नेक्स्ट है टेबल नंबर 4E, डीम्ड एक्सपोर्ट, राइट? लाइक सप्लाईज मेड टू EOU, करेक्ट? सप्लाई made against the advance authorization or EPCG scheme, that is known as deemed export, right? Again, GSTR 1 table 6C is relevant in that case, which is also auto populated. But इस केस में भी ऐसा हो सकता है कि deemed export is reported as the regular supply in GSTR 1, right? So in that case you can rectify those things in GSTR 9. इसमें भी एक चीज है, those who are pursuing for the refund on account of deemed export, अगर आपने GSTR 1 में उसको करेक्टली रिपोर्ट नहीं किया है तो डिपार्टमेंट विल नॉट अलाउ यू टू गेट द रिफंड इन दैट केस. एंड दैट इज व्हाई इसमें भी करेक्ट एक्शन ये रहेगी कि यू अमेंड योर GSTR 1 फर्स्ट. जिधर आपने रेगुलर फ्लैग सिलेक्ट किया था तो अमेंडमेंट में उसको डीम्ड एक्सपोर्ट कर दो एंड आफ्टर दैट यू डू द नेसेसरी चेंजेस इन योर GSTR 9. तो अगर कुछ रॉन्ग रिपोर्टिंग हुआ है, रेगुलर सप्लाई अगर आपका डीम्ड एक्सपोर्ट हुआ था या वाइस वर्सा, दैट यू कैन रेक्टिफाई हियर. ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में रिपोर्टिंग ऑफ द सप्लाई एट द कंसेशनल रेट, जिसको हम मर्चेंट एक्सपोर्ट बोलते हैं, इन केस ऑफ मर्चेंट एक्सपोर्ट इट इज एक्चुअली योर B2B सप्लाई, दैट इज नॉट डीम्ड एक्सपोर्ट. बट इन मेनी केसेस it is observed that people are reporting those things under the head of deemed export. So in that case also you required to report merchant export under the under table number 4B, that is B2B supply. तो वो भी आप इधर से निकाल सकते हो. If there is any missing transaction, तो आपने डीम्ड एक्सपोर्ट किया है बट आपने GSTR 1 में उसको रिपोर्ट नहीं किया था या मे बी आपने सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट किया, तो ऑल दोज मिसिंग ट्रांजेक्शन यू कैन ऐड अंडर द table number 4E. Table number 4F, again table number 4D and 4E both are mandatory tables. Table number 4F, advance on which tax has been paid but invoice has not been issued. This is specifically applicable in case of services because advance received on the supply of goods is not subject to the payment of tax, right?
it is applicable only in case of services. So if there is any unadjusted advance, so advance is received, tax is paid, but invoice is not raised. In that case, you required to provide the information of that unadjusted advance in table number 4A. Now, how to get this information? You can get this information from table 11A and 11B of GSTR 1. As I mentioned, it is only applicable in case of advance of services. Advance must be adjusted in the return. Direct adjustment in GSTR-9 may create the problem. Right? So, ऐसा हो सकता है कि I have raised the invoice, but I forgot to adjust that particular aspect in GSTR-1. So, in that case, it is not advisable to do the direct adjustment in GSTR-1, GSTR-9. In that case, it is advisable to make the necessary adjustment in your GSTR-1 and do the remaining, and then only you can do the adjustment in GSTR-9. Table number 4G, किसके बारे में है? Inward supplies on which tax is paid under the reverse charge basis. So RCM, okay, supplies on which tax is paid under the reverse charge mechanism. Okay, all those details. Now, from where you will get this information? From GSTR 3B, because in GSTR 1 we are not reporting details of supplies on which tax is payable under the reverse charge mechanism. So this is inward supply basically, not the outward supply, right? Inward supplies on which tax is paid under the reverse charge mechanism. So you will get the information from table number 3.1. Now, what precaution we should take while filing information in table number 4G? क्या हमको precautions लेने हैं? पहला precaution, compare the liability with GSTR 2A/2B. 2B में आपके auto populated liability कितनी? Compare that liability. So compare the liability paid in GSTR 3B with the liability auto populated in GSTR 2B. Now remember, it may happen that aggregate liability which is paid under the reverse charge mechanism is more as compared to the auto populated liability in GSTR 2B. But do the party wise analysis. It may happen that some of the parties have inadvertently reported certain supplies against your GSTIN number. Or it may happen that you have failed to account those transactions in books of accounts. So to avoid the future litigation, compare party-wise. Do the party-wise analysis, party-wise RCM liability paid during the financial year and party-wise liability auto-populated in GSTR. So whichever is the higher, that you require to pay in GSTR 3B. So if any liability is missed, in that case, you can pay that liability through GSTR 3B till 30th November in order to avail the input tax credit. Now, table number 4G1. This is newly introduced table from this financial year, right? क्या है इस table में? When this table is applicable, table 4G1 is applicable in case of e-commerce operator who are liable to pay tax under section 9 subsection 5. In case of restaurant, if say restaurant is supplying some food through say Zomato or Swiggy, in that case, even if that restaurant keeper is registered under GST, tax is payable by the e-commerce operator. So e-commerce operator required to furnish that information in this table, table number 4G1. तो क्विकली एक बार रिव्यू करते हैं. 4A में हमको देना है B2C के सप्लाईज, 4B में हमको देना है B2B के सप्लाईज, 4C में हमको देना है एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स, 4D में हमको करना है SCZ विद पेमेंट ऑफ टैक्स, 4E में हमको इंफॉर्मेशन देना है डीम्ड एक्सपोर्ट, 4F में हमको देना है अनएडजस्टेड एडवांसेस ऑन द सर्विसेज, 4G में हमको देना है RCM से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, and 4G1 is applicable only in case of e-commerce operator where tax is
paid by the e-commerce operator under section 9 subsection 5. Now table number 4I, right? Table number 4I is regarding the credit notes. Credit notes issued under section 34. तो 34 के अंडर आप जो क्रेडिट नोट देते हो उसका इंफॉर्मेशन आपको देना है इन टेबल नंबर 4I of GSTR-9. अगेन दिस इज ऑटो पॉपुलेटेड फिगर बट एडिटेबल. तो ऐसा हो सकता है कि लास्ट ईयर का कोई क्रेडिट नोट आपने करंट ईयर में रिपोर्ट किया. लास्ट ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर 2022-23. तो 22-23 का अगर आपने 23-24 में रिपोर्ट किया है तो इन दैट केस you required to reduce that amount because here we are just reporting the information of 2023-24. Right? Can I add new credit note in GSTR-9? Answer is no. You can add credit note in GSTR-9 only when it is reported in GSTR-1 and then only you can add here directly in GSTR-9. Remember, if there is additional liability payable, even if you have not reported in GSTR-1 or 3B, you can directly report that amount in GSTR-9. But you cannot directly reduce your GST liability by way of credit note directly in GSTR-9. You're required to report that in GSTR-1 and then in GSTR-3B. Section 34 specifically says that you can reduce liability only when you report that particular credit note in your return filed under section 39. तो GSTR-3B में अगर आप वो क्रेडिट नोट दिखाते हो, कंसिडर करते हो, then only you can reduce your liability. Okay, so reporting of missing credit note in GSTR-9 without reporting it in GSTR-1 and 3B is not permissible. Make it very clear. Debit note. Now debit note के केस में again you can opt that information from table 9B of GSTR-1. GSTR-1 में से आप वो ले सकते हो information. Reporting of missing debit notes in GSTR-9 is permissible even without reporting it in GSTR-3B. तो R1 3B में आपने डेबिट नोट नहीं रिपोर्ट किया, नो प्रॉब्लम, यू कैन डायरेक्टली रिपोर्ट इट इन GSTR-9. बट इसका प्रॉब्लम है, इफ यू आर डायरेक्टली रिपोर्टिंग इट इन GSTR-9 without reporting it in GSTR-1 and 3B, your customer won't be able to get the input tax credit on that debit. So again, correct manner of reporting debit note is that कि आप उसको GSTR-1 में रिपोर्ट करो, GSTR-3B में रिपोर्ट करो, and then you report that amount in GSTR. Table number 4K and 4L is regarding supplies / tax declared through amendment. Positive, and here it is negative. You can get this information from table 9A and 9C of GSTR-1. Again, it is editable. Now see, suppose मैंने A को सप्लाई किया, लेकिन while reporting I have reported against the GSTIN number of Mr. B. तो मैंने उसको subsequently amendment कर दिया. Now whether that amendment will form the part of table number 4K and 4L, answer is no. आपको 4K और 4L में कौन सी amendments report करनी है? Amendments which are having the tax impact. So if there is tax impact, then only you will report those aspects in table number 4K and table number 4L. तो सिर्फ GSTIN नंबर चेंज किया, in that case there is no tax impact, and in that case you need not required to report that information in table number 4K and 4L, provided that your place of supply is same. अगर आपका place of supply change हो रहा है तो आपका tax भी change हो जाएगा. तो से मिस्टर ए जो हमने एग्जाम्पल में लिया था, ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र, आई एम ऑल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र, राइट. तो इन दैट केस CGST HGST एप्लीकेबल था. मैंने मिस्टर बी हु इज लोकेटेड इन गुजरात, उसका GSTI नंबर डाल दिया.
So I am located in Maharashtra. B is located in Gujarat. So I paid IGST, right? But originally CGST AGST पेड करना था मुझे, मैंने IGST पेड कर दिया, correct? So even if I am changing GSTIN number here in this case, since place of supply are different, I required to consider that amendment in table number 4K and 4L. अगर सेम स्टेट में GSTIN नंबर था, ए भी महाराष्ट्र में है, बी भी महाराष्ट्र में है, मैं भी महाराष्ट्र में हूं, तो इन दैट केस टैक्स इंपैक्ट तो कुछ होने वाला नहीं है. तो इन दैट केस देयर इज नो नीड टू रिपोर्ट सच अमेंडमेंट्स इन GSTR-9 in table number 4K and 4. 4M is subtotal of this I to L, and 4N is total of previous table 4H plus 4, right? So table number 4 हमने देखा, table number 4 which is applicable in case of outward supplies on which tax is payable, outward supplies on which tax is payable. In that case only table number 4 is. Now let's understand table number 5. What is table number 5? Details of outward supplies made during the financial year on which tax is not payable. So details of outward supplies on which tax is not payable, जिस पे tax payable नहीं है, correct? 5A क्या है? Zero rated supply export without payment of tax. Export without payment of. Table number 6A again will be the source table for filing the information. रॉन्ग रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, अगर आपने विद पेमेंट का टैग लगाया था, विदाउट पेमेंट का टैग लगाया था, तो दैट यू कैन रेक्टिफाई हियर इन टेबल नंबर 5A. अगर कुछ मिसिंग ट्रांजेक्शन है तो वो भी आप टेबल नंबर 5A में रिपोर्ट कर सकते हो. अगेन दिस इज द मैंडेटरी टेबल. टेबल नंबर 5B, सप्लाई टू SEZ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स. देखो ऊपर हमने विद पेमेंट ऑफ टैक्स के दोनों भी देखे थे, एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स, export without payment of tax. Here you require to report export without payment of tax and SEZ without payment of tax. तो ऊपर हमने with payment of tax का इंफॉर्मेशन दिया था, इधर आपको without payment का इंफॉर्मेशन देना है. In case of SEZ without payment of tax, source table will be table 6B of your GSTR-1, which is auto populated but editable. Again same, अगर कुछ wrong reporting हुआ है तो you can rectify. कुछ मिसिंग है तो दैट आल्सो यू कैन ऐड इन दिस टेबल. अगेन फर्निशिंग इंफॉर्मेशन इन टेबल नंबर 5B इज मैंडेटरी, देयर इज नो रिलैक्सेशन. टेबल नंबर 5C, सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय द रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. So basically it is my outward supply, but it is subject to reverse charge mechanism. Means I did not require to make the payment. Recipient is liable for the payment of tax under reverse charge mechanism. For example, in case of goods transportation agency, recipient is liable for the payment of tax. So in that case, if I am goods transportation agency, my supply will be covered in table number 5C. 5C में मैं उसको कवर कर सकता हूं. 5C1, this is newly introduced table from this financial year. हमने ऊपर 4G1 टेबल देखा था, where if supply is made under section 9 subsection 5 through e-commerce operator, in that case e-commerce operator is liable for the payment of tax even if I am registered. Restaurant service, तो restaurant service का एग्जांपल मैंने दिया था कि in case of restaurant service, even if I am registered under GST, even if my restaurant is registered under GST, and if I am supplying through e-commerce operator, in that case I am not liable for the payment of tax. E-commerce operator is liable for the payment of tax. So in that case
in table number 4G1, e-commerce operator is required to furnish the information of supplies on which tax is paid by the e-commerce operator. Now in 5C1, supplies on which tax is paid by the e-commerce operator as per section 9(5) on behalf of supplier is required to be reported. तो इन दिस केस जो रेस्टोरेंट्स है जिन्होंने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई किया था उनको इंफॉर्मेशन देना है इन टेबल नंबर 4C1. अगेन फर्निशिंग इंफॉर्मेशन इन 4C1 इज मैंडेटरी. टेबल नंबर 5D is regarding exempted supply, 5E is regarding nil rated supply, and 5F is regarding non-GST supply. Table 8 of GSTR1 will be relevant table for furnishing this information. Right? Missing transaction अगर कुछ है तो आप इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं. आप जब 5D, 5E एंड 5F में कुछ इंफॉर्मेशन भर रहे हो तो उस वक्त आपको रूल 42, 43 जो है एग्जम्प्टेड एंड टैक्सेबल सप्लाईज के केस में आपको जो कॉमन आईटी से इनपुट रिवर्सल करना पड़ता है तो उसका इंपैक्ट आपको एक बार देखना है. अगर कुछ आपके पास से मिसिंग हो गया है तो वो इंफॉर्मेशन आप इसमें भर सकते हैं. नाउ गवर्नमेंट हैज गिवन यू एन ऑप्शन टू रिपोर्ट इंफॉर्मेशन ऑफ नील रेटेड एंड एग्जम्प्टेड सप्लाई अंडर द हेडिंग ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई ओनली. तो आपके पास अगर दोनों इंफॉर्मेशन सेपरेटली है तो नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है. बट अगर आपके पास सेपरेटली नहीं है तो यू कैन रिपोर्ट दैट फिगर कंसोलिडेटेड इन एग्जम्प्टेड सप्लाई. बट नॉन जीएसटी सप्लाई का जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको सेपरेटली ही देना है. सो इन केस ऑफ नॉन जीएसटी सप्लाई इट इज मैंडेटरी. इन दैट केस यू कैनॉट रिपोर्ट दोस ट्रांजेक्शन अंडर द हेडिंग ऑफ एग्जम्प्टेड और नील रेटेड. Again, in case of non-GST supply also, you required to see the cognizance of missing transaction and rule 42 and 43. वो भी आपको इस केस में देखना है. So total of table number 5A to 5F will be auto populated in table number 5. अभी table number 5H. Table number 5H is regarding credit note issued in respect of transaction specified A to F. A to 5A to 5F उसका जो भी क्रेडिट नोट होगा that information will be auto populated in table number 5H. Okay, similarly table number 5I is regarding debit note. Same logic which we have seen in case of debit note and credit note in case of outward supplies on which tax is payable. Same logic will be applicable in this case also. मिसिंग एंट्रीज अगर कुछ रहती है तो दैट यू कैन ऐड हियर. इम्पैक्ट ऑफ नॉन प्रिपरेशन ऑफ ई इनवॉइसिंग हाउएवर नीड्स टू बी टेक केयर. सप्लाईज डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट 5J and supplies declared reduced through amendment. So amendments positive and negative, table number 9 and 9C will be the source table. Now government has given you an option कि debit note, credit note, amendment plus and minus इसका जो भी इंपैक्ट है वो डायरेक्टली आप टेबल नंबर 5A to 5F तक ले सकते हो. 5A to 5F में आपका जो भी अमेंडमेंट या जो भी आपका डेबिट क्रेडिट नोट का इंपैक्ट है यू कैन डायरेक्टली कंसिडर दैट इंपैक्ट इन टेबल नंबर 5A to 5 टेबल नंबर 5F. इन माय ओपिनियन जो हम लोग करते हैं उसमें डोंट कंसोलिडेट दोज थिंग्स इनटू टेबल नंबर 5A to 5F. When separate details are available with you and separate reporting is also available, in that case there is no point in reporting that information in table number 5A to 5F. Keep that information separately, report that information separately in table number 5H, 5I, 5J and 5K of table number 5. Right? Now table number 5L is subtotal of H to K, right? And turnover on which tax is not paid will be table 5G to plus table number 5L. So 5G plus 5L will be turnover on which tax is not payable. So this will be the turnover on which tax is not payable.
and table number 4N plus 5M minus 4G will be your total turnover as per GSTR-9. So this will be total turnover as per GSTR-9 और यही टर्नओवर को आपको रिकंसाइल करना है आपके बुक्स के टर्नओवर के साथ इन केस ऑफ GSTR-9C, right? So this will be the total turnover including advances, right, as per GSTR-9. ये GSTR-9 के हिसाब से आपका टर्नओवर होगा. तो दिस वाज रिगार्डिंग टेबल नंबर 4 एंड टेबल नंबर 5. आई होप आपको टेबल नंबर 4 में एंड टेबल नंबर 5 में क्या इंफॉर्मेशन भरनी है वो आपको समझ में आई होगी. एट द एंड मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा कि अगर कोई एडिशनल लायबिलिटी है, अगर कोई एडिशनल लायबिलिटी है जो आपने GSTR-1 या GSTR-3B में नहीं दिखाई है, so in that case you can directly add this liability and add that liability in GSTR-9. अगर कुछ इनवॉइसेस आपने सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट किए हैं तो उसका इंफॉर्मेशन भी आपको बाय डिफॉल्ट GSTR-9 में ऐड करना है. बहुत सारे लोग ये इंफॉर्मेशन छोड़ देते हैं बट वो इंफॉर्मेशन आपको GSTR-9 में ऐड करना है. अगर आपने कोई क्रेडिट नोट रिपोर्ट नहीं की है GSTR-1 एंड 3B में तो इन दैट केस यू कैन नॉट डायरेक्टली रिपोर्ट दैट क्रेडिट नोट इन GSTR-9. आपको अगर लायबिलिटी कम करनी है बाय वे ऑफ क्रेडिट नोट तो इन दैट केस यू रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट दैट क्रेडिट नोट फर्स्ट इन GSTR-9, in GSTR-1, GSTR-3B, then only you can report those credit notes in GSTR-9. डेबिट नोट के केस में ये रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है. जिधर भी आपको गवर्नमेंट को टैक्स पेड करना है तो इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली ऐड दोस ट्रांजैक्शन इन GSTR-9. तो डेबिट नोट के केस में अगर कोई मिसिंग डेबिट नोट है तो इन दैट केस इवन इफ यू हैव नॉट रिपोर्टेड इट इन GSTR-1 और 3B यू कैन डायरेक्टली ऐड दैट particular debit note in GSTR-9 and you required to pay the differential tax amount through DRC 03. इसमें सिर्फ एक पॉइंट ध्यान में रखिए, अगर आप कोई डेबिट नोट डायरेक्टली GSTR-9 में रिपोर्ट करते हो तो योर कस्टमर इज नॉट गोइंग टू गेट द क्रेडिट. इसमें और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिधर जिधर आप मिसिंग ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कर रहे हो पर्टिकुलरली B2B ट्रांजैक्शन जिधर भी है, इन दैट केस यू रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट दोस ट्रांजैक्शन ऑन ई-इनवॉइसिंग पोर्टल आल्सो, because without e-invoice that debit note, credit note or invoice is not the valid document, right? तो ये भी एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखना है. So I hope you understood this table number 4 and table number 5. In next session we will see or we will analyze table number 6, table number 7 and the most important table, table number 8. Thank you very much.